अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया विद रियल लाइफ कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडिंग पेरीमीटर एंड एरिया to ensure students never mix up these two core mathematical concepts because they are different from each other. We use a simple natural visual tools. First one is that the golden rule. Perimeter is the outside boundary line walking around the fence of the space, and the area is the inside flat space, the green grass covering the surface. For example, you can take your example here, a book. Outside boundary are perimeter, inside the books are area. Perimeter. Now let's start perimeter, the boundary. The definition here is that the total linear distance around the outside. Imagine stretching a boundary wall out into one single straight line. हमारे पास जो टोटल बाउंड्री होगी वो हमारा पेरीमीटर होगी। इधर वो 2D शेप्स भी हो सकती हैं, वॉल भी हो सकती है, डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड एजेस यानी कि उनके कॉर्नर्स को जितने भी डिस्टेंस होगा उनके कॉर्नर्स का वो हो सकता है। स्मॉल रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं हम। मोबाइल फ़ोन, the plastic or rubber bumper case wrapping safely around the outer edges of your smartphone. Photo frame, the wooden border outline holding the photo glass perfectly together, and classroom walking along the base of the wall all the way around the room until you return to the entrance door. हमारे पास जितनी भी बाउंड्री होगी वो क्या होगी? पेरीमीटर। ओके, फार्मूलाज हैं हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल के। पेरीमीटर के लिए हमारे पास 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, स्क्वायर के लिए हमारे पास उसकी 4 साइड्स के साथ, एंड ट्राइंगल के लिए हमारे पास उसकी तीनों साइड्स। क्लियर? एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, अ फुटबॉल फील्ड बाउंड्री लाइन, अ बुक कवर, a square ludo board, a sticky note, a triangular pizza slice, a road sign edge. These are the example everyday lives. Okay, now let's see area, the surface space. The definition is that the actual amount of the space enclosed inside a shape boundary. अब जितनी भी चीज़ें हमारे पास उस बाउंड्री के अंदर होंगी वो क्या होगा? एरिया, इनसाइड द शेप्स. It is always measured in square units like centimeter square or meter square because we multiply by two flat dimensions together. Okay. Small real life examples, the bed, wall painting, mobile screen, etc. Same as a shape formula and key concept notes. रेक्टेंगुलर के लिए हमारे पास एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। स्क्वायर के लिए हमारे पास उसकी साइड्स, एंड ट्रायंगल के लिए हमारे पास होगा हाफ, बेस एंड हाइट। मल्टीप्लाइड बाय 2 परपेंडिकुलर साइड्स में करेंगे। ऑल साइड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ बिकॉज वो एक जैसी होती हैं स्क्वायर में, सो दैट्स वाई exactly half the space of a full rectangle. So we can solve example step by step. Example 1 here, length given है हमारे पास, a student study desk has a length 5 meter and a width of 3 meter. Find both its perimeter and area. The first one is that dimension, L is equal to 5 meter width. Calculate perimeter, the boundary. Perimeter is equal to 2 multiplied by L plus W. हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, L गिवन है, विड्थ गिवन है, सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। 5 plus 3, 8 and 2 8 is 16. Now area. Area is equal to L multiplied by W. So 5 multiplied by 3, the answer is 15 meters square. Now we can see another example finding perimeter and area of a square. A square floor tile has a single side length 6 cm. Calculate its boundary line, distance and its the flat surface space. Identify given sides. All 4 sides are equal 6 cm. Calculate perimeter. 4 multiplied by sides, 4 6 are 24. And calculate area. Area is equal to side multiplied by side. So 6 multiplied by 6, the answer is 36 centimeters square. Remember your region, perimeter, the boundary fence, and the area, the grass
space, and the standard units remain single, meter, centimeter, and millimeter. And the units always become squared, meter square, centimeter square, millimeter square. Thank you so much. See you in the next lecture. Allah Hafiz.